Just 1 second. Good evening and welcome everyone to this live session. So this live session basically is on how to utilize last 60 days before prelims 2019. Sorry for the wrong title below. So this session is going to talk, I'm going to talk about the last 60 days before prelims 2019 कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, how much time should be allocated to a particular subject, be it polity, economy, geography, history, environment and ecology, current affairs. तो ये सब चीजों को स्टडी करेंगे next 15 to 20 minutes में. So let's begin with it. तो बेसिकली पहले ही आता है कि 60 डेज में हम जो स्ट्रेस लेते हैं ये सब चीजों को हमें वी हैव टू कीप द स्ट्रेस एट बे एंड वी हैव टू प्रोडक्टिवली यूटिलाइज दिस next 60 days for our goal UPSC Civil Services Exam 2019. So here, just allow me a minute guys. So here, study hours कितने होने चाहिए, focus should be on things to remember, things not to be ignored and subject wise strategy. So this discussion is simply to help you form your own strategy for the last 60 days. माइक्रो पिन पॉइंटिंग आई विल नॉट बी इंडल्जिंग इन द माइक्रो पिन पॉइंटिंग कि ये इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. आई लीव इट टू यू. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एरियाज, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? इफ योर स्ट्रेंथ इज इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, यू शुड मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ. वीकनेस क्या है? वीक स्पॉट जैसे कि कई लोगों की वीकनेस होती है एंशिएंट हिस्ट्री, ओके, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मिडिएवल हिस्ट्री. तो वीकनेसेस को थोड़ा सा हमें ग्रिप में लेना है. कैसे? इनसोफार एज योर प्रीलिम्स दिस 10 years is concerned, previous year questions are concerned. So what you should do is जो एरिया से वीकनेस, जो आपके वीक स्पॉट्स हैं, उन एरियाज वीक स्पॉट्स जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एटलीस्ट उन टॉपिक्स के अराउंड के एक दो टॉपिक्स हम अच्छे से कवर कर लें. फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तीर्थंकाराज, ये सब चीजों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा हम अच्छे से, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें. अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज आर लाइक जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हर सब्जेक्ट के, जहां से कि प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम अपनी ग्रिप में कर लें. थ्रेट्स लाइक सीसैट, वी नेग्लेक्ट, वी टोटली इग्नोर सीसैट्स, तो ये थ्रेट्स को भी हमें अपने कंट्रोल में करना है, राइट? सो इज द स्ट्रीमिंग प्रॉपर? I can see, is the streaming audio visual proper guys? Some of you are this query is here. So this is it, right? So now you must resolve, first of all, even if 60 days are remaining, these 60 days can make or mar your future. If you are a person who cannot handle stress, learn to handle stress. Even if you have been preparing, जो लोग पूरा साल प्रिपेयर कर रहे थे उनके ऊपर भी इस टाइम पे स्ट्रेस होगा, और जो लोग नहीं कर रहे थे उनके ऊपर भी होगा, राइट? तो पहले तो एक रेजोल्यूशन कि हाँ हमें क्लियर करना है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी. क्लियर? तो दिस इज देयर. व्हाटएवर मे बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, व्हाटएवर बी योर फैमिलियल सर्कमस्टेंसेस, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, दिस इज अ मस्ट कि ओनली बुक शुड बी विजिबल टू यू. You would be doing justice to your family, you would be doing justice to your financial resources, you would be doing justice to everyone around and to yourself and to this society, everyone, if you focus for next 2 months on your goal. Once you make a resolution, give everything you have to empower yourself to do the to your best on the deciding day, the D-day, right? Your disciplined and consistent study can only lead you to your target. That is how you'd be able to follow your timetable rigorously. Be calm and composed. This is the time to work more and think less, worry less. Okay, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नॉर्मल इश्यूज में भी दे वुड स्टार्ट वरिंग अ लॉट. सारी चिंताएं इस टाइम पे सताने लगती हैं, राइट? सो ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो. स्टडी आवर्स की अगर हम डिवीजन देखें, यू वुड हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स फॉर एटलीस्ट 1 month, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, माय डियर फ्रेंड्स. मई में तो वैसे ही वी हैव टू एडजस्ट आवर बॉडी रूटीन, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द डिसाइडिंग डे, द 2nd of June, राइट? So this is there.
तो इसमें क्या करना है, अप्रैल में 12 to 15 आवर्स ट्राई टू स्ट्रेच योरसेल्फ, ट्राई टू स्ट्रेच योर लिमिट्स. Is it fine now? Now it should work fine because now the Wi-Fi streaming it has got. Is it fine, guys? So okay, fine. So here we go. First half an hour, right after you open your eyes, devote to any good source, be it your polity, economy, just to give that confidence. Morning ablutions can follow later on. You can taking water, etc., can be postponed for at least half an hour, right? So you could read current affairs or the source which you were referring to at night. So these are small things. Before going to bed tonight itself, you should set your timetable for next day, 28th of March. Okay, timetable and clutter on the table should be cleared. पहले से ही timetable should be decided so that the moment you open your eyes, जैसे ही आंख खुले साथ के साथ किताब खुल जाए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्लान कर रहे हैं कि अभी क्या पढ़ेंगे और ये सब में आधा घंटा नहीं जाना चाहिए. फर्स्ट हाफ एन आवर इज वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो उस हाफ एन आवर को यूटिलाइज कर लिया तो फिर उसके बाद में लगेगा कि हाँ दिन पकड़ लिया है. इफ यू आर if you are habituated to getting up early, fine. If you are waking up at 9 a.m, fine. Follow your routine. अप्रैल के लिए 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हो. मई में बीमार नहीं पड़ना है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल इन द मंथ ऑफ मई. तो आप क्या करोगे कि नॉर्मल 10-12 घंटे जितना ईक आउट कर सकते हो, जितना स्ट्रेच कर सकते हो. और इसके बाद में हर रोज सॉल्व अ टेस्ट पेपर. सपोज इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी फॉर नेक्स्ट 10 days, ओके, so solve polity related test papers for those 10 days. And suppose if you are reading economy for 10 days, solve economy related test papers for those 10 days. And simultaneously, jab economy you are reading, when you are reading economy, you should read economy related current affairs. When you are reading polity, you should read polity related current affairs. So 4 to 5 hours of polity you can study, okay, 2 to 2.5 hours or 4 to, some people they study one subject at a time, okay, one subject at a time. To 4 to 5 hours you can study polity, or that day you have to solve a test paper within 2 hours using your stopwatch or digital watch, time लगा के. Get the OMR sheets photostated, okay, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके यूपीएससी OMR शीट, और उसके प्रिंट आउट ले लो 20, 50, 100, 200 जितने भी लेने हैं, और उनको सॉल्व करोगे तो OMR शीट पे 2 घंटे का टाइमर लगा के मोबाइल पे तब सॉल्व करना है, हिलना नहीं है. डिसिप्लिन योरसेल्फ. एंड जब ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, साइड बाय साइड पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स भी उन्हीं दिनों में पढ़ें जिस टाइम पे आप पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो. दिस वे यू विल बी carrying both the things parallelly. The polity related current affairs will reinforce your polity related static portion. Polity related static portion will reinforce your preparation of polity related current affairs. And over and above that, when you will solve the test paper, that will further concretize your study or memorization of polity and polity related current affairs. This is a rhythm you can follow. इसमें बोर्डम आने के चांसेस रहते हैं, बोर होने लगोगे कि सारा दिन पॉलिटी देख रहे हो. बट लेट मी टेल यू, यू कैन डाइवर्सिफाई. यू कैन रीड द न्यूज़पेपर एट 8 PM इन इवनिंग में, या फिर इन बिटवीन यू कैन रीड द न्यूज़पेपर फॉर सम टाइम, और यू कैन स्टडी एनी स्टैटिक सब्जेक्ट फॉर 1 or 2 hours इन बिटवीन, जब कभी बोरिंग आने लगे, राइट, कि बोर हो रहे हैं बिल्कुल ही. तो ये स्ट्रैटेजी है. और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, दे कैनॉट stretch with, they cannot carry with the one subject the whole day. What they do is they study 2 subjects a day. So you can adopt the strategy which works with the strategy which works fine for you, right? So this is there. Now half an hour revise any previous 2 tests, previous years जो पहले टेस्ट कवर कर लिए हैं. Like on first test on day 1 you did test paper 1, on day 2 you should do test paper 2 plus revise test paper 1 for half an hour the next day. ओके, 1 hour जीएस प्रिपरेशन, थोड़ा सा कुछ और पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स या कुछ भी रैंडम, सो एज टू किल द बोर्डम.
इन 10 days में अगर you study one subject, you will see the results. जो चीज़ें बार बार हम इग्नोर कर जाते थे वो हम इग्नोर नहीं करेंगे, वो चीज़ें इग्नोर नहीं होंगी. आई वुड टेल यू while starting with any book like M. Lakshmikant, you can make your own index. Chapter 22 for example, chapter number 22 of M. Lakshmikant is Parliament. Okay, so this is chapter number sequence, and then this is reading 1 on 28th of March. Reading 2 has to happen on the same day, 28th of March. ये मॉर्निंग में हो गई तो ये इवनिंग में 28th of March को ही. Reading 3 has to happen in order for you to concretize the concept. Reading 3 has to happen within next 3 days, not later than 31st March, I would say. So you have to put the date and time whenever you are revising it. Okay, so chapter number 23, yeah, chapter on Panchayati Raj institutions, chapter on municipal corporation, municipal bodies, PRIs का chapter है, municipal bodies का chapter है. This is how you have to revise them up. Okay, date, reading 1, reading 2 and reading 3. These 3 readings will concretize your the concepts or the facts underlying a chapter, given in a chapter. Focus should be on pattern of questions that have been asked in the last 5 years. No matter how much are you scoring in the test series, no matter your score is low or high, UPSC template of question paper is going to be UPSC template only. You know, no amount of question papers or mock tests can substitute for the UPSC standard paper. So go for the UPSC standard question paper at night before sleeping. Okay, as to whether your preparation is in line with the UPSC standard question papers. Okay, so pattern of questions asked in last 5 years, I would say 2011 onwards, जब से pattern change हुआ था. Important and UPSC favorite topics like UPSC का ये बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत अच्छा प्यार है, right? तो ये चीजें, government schemes, factual details, you have to be precision oriented. Remember guys, this prelims is not of recalling your knowledge, recollecting. This is just of recognizing the correct option, and anyone can recognize a correct option provided you have revised the same content again and again, right? Index, reports and rankings of India, ease of doing business, या फिर Swachh Bharat ranking of states, etc. These are important, and some of these statements would be from the concepts also कि ease of doing business में क्या क्या criteria लिया जाता है. हिस्ट्री की अगर हम देखें, हिस्ट्री की टाइमलाइन 1905, 1907 सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पे अटेंशन टू मॉडर्न हिस्ट्री. इफ आई वर टू टेल यू मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड्स, 1900 टू 1947, 1857 से 1873 तक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जैसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है. बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत एक्सेट्रा. देन 1900 से 1947 की मॉडर्न हिस्ट्री इज the most important out of the entire thing, right? So acts, legislations that have been passed in last 1 year, इनके लिए I have a blog that is Jatin Verma, www.jatinverma.org. यहाँ से आप important जो stuff है current affairs related या जो भी concepts हैं, I try to explain the stuff in a language which is easy for you guys to understand. तो आप यहाँ से jatinverma.org blog है, यहाँ से आप ये files download कर सकते हो, PDF वहाँ पे कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. एंड देन करंट अफेयर्स मैगजीन भी अवेलेबल है इस ब्लॉग पे. यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ. यू कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज द पेड हार्ड कॉपी इज आल्सो अवेलेबल, राइट? तो एक्ट्स जो लास्ट 1 ईयर में है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आप मेरे ब्लॉग से कवर कर सकते हो. स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी, जो करंट अफेयर्स हैं और जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके लिए. नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज एंड ग्रुपिंग्स. ओके, तो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी PDF विल बी अपलोडेड ऑन माय ब्लॉग देयर. एंड इकोनॉमिक सर्वे, जो प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक सर्वे है उसकी समरी एक्सेट्रा यू हैव टू गो थ्रू. आई विल बी शेयरिंग दैट अगेन ऑन माय ब्लॉग इन अ डे और 2. ये इकोनॉमिक सर्वे की समरी भी आई विल बी शेयरिंग इट ओवर देयर. तो फोकस शुड बी ऑन दीज थिंग्स. नाउ व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द मैप ऑफ इंडिया और atlas map or something, we have to keep India at the focus. First of all, you should be thorough with India, and then you should be moving out. Southeast Asia. Okay, focus has been Southeast Asia, West Asia, you can say Middle East. Okay, then
Central Asia. Questions have been asked in the last 5 years primarily from this area in the prelims. Prelims में इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं. इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के कोल रिजर्व, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिजर्व्स, ये सब चीजें. देन वन सेक. देन मूव आउटवर्ड्स. बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट. काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर्स जा रही हैं, या फिर भिट्टरकनिका, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, आईयूसीएन स्पीशीज कौन सी हैं, ये सब. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय व्हाट डिग्री ऑफ चैनल्स. ओके, कौन सा चैनल है, ये सब चीजें. आई विल टॉक अबाउट द मोटिवेशन इन लास्ट 10 minutes, डोंट वरी. ओके, सो दिस इज देयर. नाउ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज में रहती हैं, जैसे कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्टिंग पाकिस्तान. ओके, तो ये सब चीजें जो न्यूज में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ऑल दीज बॉडीज विच हैव रिमेन्ड इन न्यूज फॉर लास्ट 1 year. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये मेरी करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाएंगी, राइट. So this is there. Now things to remember. Revision is the key here. Revise and revise again from the same source. Do not switch from one book to another, क्योंकि एक याद नहीं हुई तो दूसरी से हो जाएगा. कोई बुक में कुछ आसान नहीं है, राइट. नॉलेज वही है, बार बार डिफरेंट वर्ड्स में दे रखी है, तो इट्स बेटर टू रीड सेम थिंग 5-7 times, 3 times, at least 3 times from the same source. Make sure that you have short notes. अभी भी शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं 15 से 20 पेजेस के ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सो दैट लास्ट 15 days में यू नीड नॉट सर्च फॉर द बुक ऑफ ज्योग्राफी, एनसीईआरटी और पॉलिटी और इकोनॉमी. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं, वो चीजें हैं जो आप भूल जाते हैं, कोई और नहीं, जो आप खुद भूल जाते हैं. उन चीजों के लिए अपने नोट्स होना जरूरी है. They cannot be the notes made by someone else. They have to be your own notes. Make feasible targets. Do not make targets ki you will climb Mount Everest in 1 day. No, do not make that mistake. Otherwise, you end up feeling dejected. You will feel dejected, morale low, motivation low ho jayega. No. Now to take notes if already not taken. Yes, only for those topics which you are prone to forget yourself. Okay, not everything, only those things which you tend to forget. Now daily target completion, make a timetable. 28 March, 29th March ko you can make the timetable, then stick to that timetable, come what may. There would be mood upswings, downswings, upswings, downswings. Don't allow these mood upswings or downswings to let you deviate from your goal. Stick to that goal, right? Now daily target completion is your sole aim. Give small gaps in between to rest your mind. Take power naps of 5 to 10 minutes, right? Test is just a learning process. Do not take the mock tests or these test series as your final score. Do not get disheartened if you are scoring low. Rather go for the explanation of all the 4 statements or 2 statements or 2 options or statements जो उसमें दे रखी हैं. Take it as an exercise in learning. You will not be the same on 28th of March or 1st of April or 1st of May as you would be on 2nd of June. All these things, test papers, revisions, forgetfulness, they are making you a better candidate, a better aspirant towards June 2nd exam. Take it as a learning exercise, right? Consistency के लिए बता रहा हूँ. Test is just a learning process. Do not get disheartened. Unnecessary gossiping और ये सब talking with friends, okay? You realize कि आधा घंटा बातों में चला गया, उसके बाद बुक तो वही पढ़नी थी, वो सब मत करो. Stay focused on your target, okay? 5-10 मिनट के लिए have a friend or two, okay? उनके साथ में बात कर सकते हो 5 or 10 minutes to ease out your tension. कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना डिस्कस, मैंने इतना कवर कर लिया. Both of you will be pulling each other up, okay? एक दूसरे की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए. Avoid people who keep on crying, नेगेटिविस्ट होते हैं, राइट? मेरा तो कुछ नहीं हुआ या कुछ भी नहीं. अगेन अवॉइड दोज पीपल जो बोलते हैं मैंने तो पूरी एनसीईआरटी एक दिन में खत्म कर दी होगी, राइट? यू हैव टू हैव अ कंपनी ऑफ योर पीपल ऑफ सेम वेवलेंथ. ऐसा नहीं है कि किसी आइंस्टाइन से दोस्ती लगा ली या फिर किसी
राइट, कि बिल्कुल ही जो नहीं पढ़ रहा है उससे, ऐसा नहीं करना है. ट्राई टू फाइंड द फ्रेंड्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, हु आर एट द सेम वेवलेंथ, राइट. इंडिया ईयर बुक का जो आपका क्वेश्चन है, jatinverma.org पे इंडिया ईयर बुक के चैप्टर वाइज समरी अपलोड करी जा रही है. एक दो चैप्टर्स की कर दी गई है, बाकी की आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से www.jatinverma.org. इसके अलावा बता देता हूँ कि आई विल बी कमिंग अप विद क्विक रिवीजन कोर्सेज फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी. क्विक रिवीजन कोर्स 20 से 25 क्लासेस रहेंगी अप्रैल और मई के महीने में अनअकैडमी प्लस पे. अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज पेड रहते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें करना हो. आप कोड यूज करेंगे जतिन वर्मा 71, JATINVERMA 71, तो you can get 10% discount, 15% discount if you use this code. Unacademy is giving 10% discount, 5% will be given from my side. इसमें हम 20 से 25 क्लासेस इंडियन इकोनॉमी की रहेंगी और 20 से 25 क्लासेस इंडियन पॉलिटी की रहेंगी, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी. ओके, सो मैगजीन्स विल बी मेड अवेलेबल. कमल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का क्वार्टरली मैगजीन रिव्यू 3 महीने का, ये बहुत जल्दी आ रहा है. क्वार्टरली मैगजीन रिव्यू 1-2 दिन में इट विल बी अवेलेबल ऑन माय ब्लॉग. तो दिस इज देयर. नाउ टू मैनी बुक्स फॉर सिंगल सब्जेक्ट आर नॉट नीडेड. ओके, अगर एक काम करना, पेजेस फाड़ने हैं बुक में से फाड़ सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन जैसे कि पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, उसी में ही उसी में ही किसी और बुक के अगर कोई पेजेस या कुछ नॉलेज है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, कट करके उसे वहीं पे रख सकते हो. Stick it over there. Okay, insert that particular news clipping in your book itself so that it acts as a ready reckoner. You are not searching for news clippings, wasting 2 hours or 3 hours doing these kind of things, right? ज्योग्राफी के लिए भी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब जो चीज़ें हैं, इनके लिए मॉनसून और ये सब के नोट्स बना सकते हो. 1-1.5 घंटा लगेगा. सॉइल्स के नोट्स, रिवर्स के नोट्स, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ज्योग्राफी के लिए. मिनरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. ओके, यस. करंट अफेयर्स के लिए मेरा जो करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स बाय जतिन वर्मा वो चल रहा है, दैट इज मोर देन इनफ. नाउ प्लीज डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ. ओके, फूड, वाटर, स्लीप, स्टे हाइड्रेटेड. अभी समर्स आर कमिंग. ओके, तो स्टे हाइड्रेटेड, पानी वानी ये सब. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो कि सेक्शन वाइज रहता है, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर नेक्स्ट 2 months. बार बार उसे देखते रहो, बार बार, अगेन एंड अगेन. The subject which is not asked in last few years, geography for example, should be prepared thoroughly. UPSC question paper is unpredictable. Okay, geography इतने सालों से नहीं आ रहा है तो आ सकता है. Art and culture. Okay, so these things are there. The topics where you are weak, at least prepare those topics from previous year question papers. Yes, issue बख्शी NCERT पढ़ सकते हो modern history के लिए, sufficient है. ओके, नाउ कंसोलिडेशन. अब जो चादर फैला रखी है उसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करो, राइट. अब चादर फैलाने का नहीं, और नोट्स और मटेरियल ऑर्डर करने से कुछ नहीं हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ऑर्डर कर सकते हो. मेरे ब्लॉग पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, राइट. क्वेश्चंस आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई ब्लॉग, तो यू कैन watch those, you can daily practice those questions also made from Hindu newspaper. इसके अलावा Unacademy पे भी I take a live session daily 6:15 PM से 6:45 पे. ये शाम में रहता है डेली. Unacademy के YouTube चैनल पे आप देख सकते हो. हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. जो 100 मॉक क्वेश्चन पेपर्स हैं, ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, ये jatinverma.org पे अवेलेबल हैं. अब उनका प्रिंट आउट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने बताया कि OMR शीट जो है उसका प्रिंट आउट लेके, जैसे एग्जाम हॉल में हम पेपर देते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करने, गोले लगा के, जो बेसिकली हर किसी को करना होता है. तो 9:30 से 11:30 के टाइम में वही टाइम रख के, स्टॉप वॉच लगा के, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इट. ओके, PIB इज बीइंग कवर्ड इन माय मैगजीन्स. जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं इशू, उसमें PIB एनालिसिस कवर्ड है. सो यू कैन रेफर टू माय करंट अफेयर्स मैगजीन्स ऑल्सो. सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, your 2 subjects must be finished in 10 days. 10 दिन के अंदर अंदर 2 सब्जेक्ट कवर हो जाने चाहिए. क्लियर. You still have to plan at least 3 revisions for each subject. चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, 3 रिविजन्स हर सब्जेक्ट की आपकी होनी चाहिए ताकि कंसोलिडेट हो सके प्रिपरेशन. जैसे ही 10 डेज की रिवीजन खत्म होगी, अगली 2 रिविजन्स 5-5 दिन में हो जानी चाहिए. फिर उसकी अगली जो एक रिवीजन रहेगी वो 3 दिन में हो जानी चाहिए, राइट. तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है.
करंट अफेयर्स डेली 2 से 2.5 घंटे, एवरी डे 2 to 2.5 hours daily you should cover current affairs and static part of the subject simultaneously. Two subjects if you are choosing to revise together, make sure one is easier for you and the other is a bit tougher, right? Daily practice 8 question paper at least for next 60 days. Vinod, so you can take 70 OMR sheets, they would be enough for next 60 days. Okay, अगर कुछ गलतियां भी होती हैं तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का हैंडआउट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट हैज बीन शेयर्ड ऑन माय ब्लॉग www.jatinverma.org. तो दिस वे बैलेंस स्टडी कैन बी डन. और बाकी हम इस चैनल पे मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे. Here I'll be covering the map related questions, environment and ecology या economy related important जो टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि रुपी का डिप्रिसिएशन या फिर रुपी डॉलर स्वैप जो किया गया है, राइट? ये स्वैप डील और ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर करते जाएंगे. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये सब चीज़ें. तो करंट अफेयर्स फॉर 1 ईयर, लता खत्री यू कैन कवर इट फ्रॉम दी मैगजीन डेली 2 से 2.5 घंटे. कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हो, मेरी मैगजीन उठा सकते हो, जतिन वर्मा करंट अफेयर्स मैगजीन, मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हो या ऑर्डर कर सकते हो हार्ड कॉपी. नाउ दिस इज ऑल. नाउ कमिंग टू द मोटिवेशन, एज आई ऑलवेज से, everything in this world has got a preparation, right? Be a person of resolution. Everything in this world has got a preparation, be it a war. अगर हमें नेगेटिव एग्जाम्पल भी लेना हो तो हिटलर से भी हम कुछ सीखते हैं, रेजोल्यूशन, राइट? कुछ जो चाहिए वो चाहिए, नो मैटर व्हाट. तो ऐसे सेंस में मेक अ गोल, मेक अ टाइम टेबल एवरी डे. जो डेली आपका टाइम टेबल रहेगा, स्टिक टू दैट, डू नॉट डिविएट फ्रॉम दैट. कि किसी ने कोई काम बता दिया, किसी दोस्त ने टेंशन दे दी, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, डू नॉट लेट दीज प्रॉब्लम्स क्रीप इनटू योर ओवरऑल टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 2 months. 60 days दिस लास्ट राउंड है ये बैटल का. मैनी पीपल दे वो हथियार डाल देते हैं लास्ट मोमेंट पे. तो जो इस स्ट्रेस में आगे ले जाएगा, बढ़ जाएगा, ही विल बी द विनर, ही और शी विल बी द विनर, एज सिंपल एज दैट. सो एक कोट से एंड करना चाहूंगा, विद टाइम एंड पेशेंस mulberry leaves also turn into silk gown. तो ये सिंपल सी बात है. नाउ बाकी के आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं. सी सैट के लिए डेली 1 or 1.5 hours 2 hours के लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो. जिनका सी सैट वीक है, RS अग्रवाल और अरुण शर्मा सर की बुक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग की, वो बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो. बेस्ट सोर्स फॉर सी सैट अगेन इज लास्ट 7 years 8 years क्वेश्चन पेपर्स. प्रीलिम्स के वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उन्हीं को प्रैक्टिस करो. Okay, so Mitra, I'll be taking the live sessions frequently. I'll take at least one live session per week for your motivation and for being a friend to you for next 2 months. Okay, एक लिस्ट recent cyclones की, ये सारा कुछ jatinverma.org ब्लॉग पे कवर करा जाएगा, राइट? तो www.jatinverma.org. इसके अलावा I told you कि Unacademy Plus पे you can join वीकली द हिंदू न्यूज एनालिसिस कोर्स. जो लोग 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अदरवाइज दोज हु आर गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर नेक्स्ट 2 months टू कवर द न्यूज़पेपर, आप लोग अनअकैडमी प्लस पे वीकली द हिंदू न्यूज एनालिसिस, जिसमें कि न्यूज प्लस एडिटोरियल्स कवर करे जाते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. टेस्ट पेपर कैसे रिवाइज करें? जो टेस्ट पेपर की एक्सप्लेनेशन दी जाती है उससे रिवाइज करने की कोशिश करें प्लीज. ठीक है, तो विद दैट आई एंड द लाइव सेशन फॉर टुडे. We'll meet again next week with some different topic. Thank you for watching this session. Bye bye guys. Good night.